अल-अक्सा हॉस्पिटल फलस्तीन में बॉम्ब किया, सिविलियंस और डॉक्टर्स के ऊपर बॉम्बिंग करी, किसने? इजराइल ने। अभी रिसेंटली फिर हॉस्पिटल्स को बॉम्ब कर दिया, किसने किया? सारे मेडिकल कैंप्स, सारे हॉस्पिटल्स, मेडिसिन सब। Hello students and welcome to another interesting lecture, and the topic of this lecture is yet another interesting part of international law, that is Geneva Convention. Geneva Convention, one of the most landmark convention and a milestone in the discourse of international law, because whatever whatever conventional war, whatever kind of ambush takes place between the armies of different countries for different reasons, what is squarely applied in times of war is Geneva Convention. While something seriously violent is going on in West Asia, and whatever the forces of Israel have been doing on the civilians and on the combatants of the armed resistance, it is important to understand the relevance and importance of Geneva Convention, significance of Geneva Convention. How since last 76 years there has been a brutal violation of certain international laws like the Geneva Convention. Okay, so let us start. Geneva Convention is a series of international treaties concluded in Geneva between 1864 and 1949 for the purpose of ameliorating the effects of war on soldiers and civilians. So it started as a series of international treaties. They were concluded in Geneva, and the period was 1864 and 1949. इसके बीच में 1864 and 1949 के बीच में, for the purpose of ameliorating the effects of war, decimate करना था, ठीक है, mitigate करना था effects of war on soldiers and civilians. Two additional protocols to the 1949 agreement were approved in 1977. जो एडिशनल प्रोटोकॉल्स थे, देखिए जेनेवा कन्वेंशन जब ट्रीटी बन जाती है, जब कोई कन्वेंशन होती है, तो उसको बार बार अमेंड नहीं किया जाता इंटरनेशनल लॉ में, एडिशनल प्रोटोकॉल्स ले आए जाते हैं. ओके, एडिशनल प्रोटोकॉल्स टू द 1949 एग्रीमेंट वर अप्रूव्ड इन 1977. तो जेनेवा कन्वेंशन 1949 की है और इसके दो एडिशनल प्रोटोकॉल्स जो हैं वो 1977 के हैं. द डेवलपमेंट ऑफ द जेनेवा कन्वेंशंस वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रेड क्रॉस, whose founder Henry Dunant initiated international negotiations that produced the Convention for the Amelioration of the Wounded in Times of War in 1864. I must underline this. It's very important. See, he started, actually it was associated with the Red Cross. Then who's the founder of Red Cross? Henry Dunant initiated international negotiations that produced the Convention for the Amelioration of the Wounded in Times of War in 1864. So, Convention for the Amelioration of the Wounded in Time of War in 1864. He started these negotiations. This convention provided for, one, the immunity from capture and destruction of all establishments for the treatment of wounded and sick soldiers and their personnel. यानी कि इस कन्वेंशन में पहली शर्त क्या थी कि जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करानी चाहिए फ्रॉम कैप्चर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स, वो सारे एस्टैब्लिशमेंट्स जो अस्पताल हैं, जो कैंप्स हैं, मेडिकल कैंप्स हैं, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, कोई अटैक नहीं होगा, वो अटैक से इम्यून रहेंगे. जहां पर जख्मी और बीमार सोल्जर्स का और उनके सिपाहियों का इलाज चल रहा है, ठीक है, वहां पर कोई भी अटैक नहीं होगा, वो अटैक से इम्यून रहेंगे. हॉस्पिटल पे आप बॉम्बिंग नहीं कर सकते, आप किसके ऊपर, मेडिकल कैंप्स के ऊपर बॉम्बिंग नहीं कर सकते. एंड टू, द इम्पार्शियल रिसेप्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल कॉम्बिटेंट्स. इम्पार्शियल रिसेप्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल कॉम्बिटेंट्स, जितने भी कॉम्बिटेंट्स मतलब जो लड़ रहे हैं, सोल्जर्स जो हैं, कॉम्बिटेंट्स,
वो उनका, आप किसी भी पार्टी के हो, आपकी अपनी पार्टी के हो, अपोजिट पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के हो, डॉक्टर्स या कोई भी, उनका रिसेप्शन या ट्रीटमेंट में कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबका इम्पार्शियल रिसेप्शन एंड ट्रीटमेंट होगा। थर्ड, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस providing aid to the wounded. Okay, protection of civilians providing aid to the wounded. And four, the recognition of the Red Cross symbol as a means of identifying persons and equipment covered by the agreement. Protection of civilians from providing aid to the wounded. जो civilians wounded को, जख्मियों को एड पहुंचा रहे हैं, उनका प्रोटेक्शन भी जरूरी है। और रिकॉग्निशन ऑफ द रेड क्रॉस सिंबल एज अ मींस ऑफ आइडेंटिफाइंग पर्संस एंड इक्विपमेंट कवर्ड बाय द एग्रीमेंट। और ये जो रेड क्रॉस होता है डॉक्टर्स का, ये इससे एक सिंबल माना जाएगा इंटरनेशनल लॉ में, एज अ मींस ऑफ आइडेंटिफाइंग पर्संस एंड इक्विपमेंट्स कवर्ड बाय द एग्रीमेंट, कि ये वाले जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं ये कवर्ड बाय द एग्रीमेंट हैं, ये भी प्रोटेक्टेड हैं, ये भी प्रोटेक्टेड है। ये देखिए, ये सारी बातें हैं हमारे सामने इंटरनेशनल लॉ की, लेकिन हम देख रहे हैं कितना वायलेशन हो रहा है। अल अक्सा हॉस्पिटल फलस्तीन में बॉम्ब किया, सिविलियंस और डॉक्टर्स के ऊपर बॉम्बिंग करी, किसने? इजराइल ने। अभी रिसेंटली फिर हॉस्पिटल्स को बॉम्ब कर दिया, किसने किया? सारे मेडिकल कैंप्स, सारे हॉस्पिटल्स, मेडिसिन सब डिस्ट्रॉय कर दिया, किसने किया? इजराइल ने किया। ओके, सो the protection of civilians providing aid to the wounded and the recognition of the Red Cross symbol as a means of identifying persons and equipment covered by the agreement. Okay, then coming to another part, the 1864 convention was ratified within 3 years by all the major European powers as well as by many other states. It was amended and extended by the Second Geneva Convention in 1906, and its provisions were applied to maritime warfare through the Hague Convention of 1899 and 1907. That's another very interesting part. See, let's not get confused. Let's keep it very simple. सबसे पहले 1864 में कन्वेंशन ऑन द एम्यूलरेशन ऑफ द वुंडेड इन टाइम्स ऑफ वॉर 1864 आया, उसमें ये 4 पॉइंट्स थे, ठीक है। उसके बाद ये कन्वेंशन को रैटिफाई किया गया 3 साल के अंदर अंदर, बाकी बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स ने इसको रैटिफाई किया और इसको अमेंड किया और एक्सटेंड किया सेकेंड जेनेवा कन्वेंशन जो 1906 में आई, 1906 में, एंड इट्स प्रोविजंस वर अप्लाइड टू मैरीटाइम वॉरफेयर थ्रू द हेग कन्वेंशंस ऑफ 1899 एंड 1907। और इसके प्रोविजंस किसके ऊपर अप्लाई किए? यानी कि अभी तो जो ग्राउंड पर वॉर चल रही थी सिर्फ उसी पर था, लेकिन अब ये मैरीटाइम वॉरफेयर पर भी आ गया, यानी कि जो पानी की लड़ाई होती है मैरीटाइम वॉरफेयर, उस पर भी आ गया मैरीटाइम वॉरफेयर थ्रू द हेग कन्वेंशन ऑफ 1899 एंड 1907। द थर्ड जेनेवा कन्वेंशन, द कन्वेंशन रिलेटिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर 1929 रिक्वायर्ड दैट belligerents treat prisoners of war humanely, furnish information about them, and permit official visits to prison camps by representatives of neutral states. ओके, अब देखिए ये तीसरी जेनेवा कन्वेंशन आई 1929 में, दिस वाज रिलेटिंग टू द कन्वेंशन रिलेटिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ओके, और इसमें क्या था, जो बेलिगरेंट्स हैं, ट्रीट प्रिजनर्स ऑफ वॉर ह्यूमनली, मतलब आपने सामने वाले सोल्जर्स को पकड़ लिया तो वो पीओडब्ल्यूज हो गए, पीओडब्ल्यूज का जो ट्रीटमेंट होगा वो ह्यूमनली होगा, इंसान को इंसान समझ के। आप दूसरे बेलिगरेंट्स हैं, मतलब सोल्जर्स हैं अपोजिट पार्टी के, तो आप ऐसा थोड़ी है कि आप उसको जानवर की तरह ट्रीट करेंगे। कीप देम डिसेंटली, ओके, ह्यूमनली, फर्निश इंफॉर्मेशन अबाउट देम एंड परमिट ऑफिशियल विजिट्स टू प्रिजन कैंप्स बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ न्यूट्रल स्टेट्स। और जो न्यूट्रल स्टेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कम से कम आके उनसे मिल सकें, उनसे बात कर सकें। ओके, ये एक हिस्ट्री है, ब्रीफ हिस्ट्री है जेनेवा कन्वेंशन की। ओके, अब आते हैं, बिकॉज सम बेलिगरेंट्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड had abused the principles contained in earlier conventions, an international Red Cross conference in Stockholm in 1948 extended and codified the existing provisions. अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बहुत बहुत जबरदस्त वायलेशंस हुआ इंटरनेशनल लॉ का, क्योंकि उसमें हमने देखा, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में अगर आप पढ़ें तो उसमें बड़ा जबरदस्त कहना चाहिए
क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम्स कमिट हुए थे उस टाइम। तो अब ये बात हुई थी कि एक इंटरनेशनल रेड क्रॉस कॉन्फ्रेंस हुई स्टॉकहोम में 1948 में, extended and codified the existing provisions. The conference developed four conventions which were approved in Geneva on August 12, 1949. The conference developed four conventions which were approved in Geneva on August 12, 1949. ये मेन जेनेवा कन्वेंशन है। और इसमें पहला क्या था? द कन्वेंशन फॉर द एम्यूलरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द वुंडेड एंड सिक इन आर्म्ड फोर्सेस इन द फील्ड। Second, the Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea. The Convention relative to the treatment of prisoners of war, and the Convention relative to the protection of civilian persons in times of war. यानी कि सबसे पहले बात सिविलियन पर्सन से स्टार्ट हुई थी, तो वो भी इसमें आ गया। ठीक है, 1864 से जो बात शुरू हुई थी 1907 1906 तक, वो सारी बातें अब 1949 में एक साथ कोडिफाई कर दी गई। कन्वेंशन फॉर द एमिलियरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द वुंडेड एंड सिक इन आर्म्ड फोर्सेस इन द फील्ड। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ था, मैरीटाइम वॉरफेयर में भी आ गया था। तो द कन्वेंशन फॉर द एमिलियरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द वुंडेड, सिक एंड शिपरेक्ट मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एट सी। Then the convention relative to the treatment of prisoners of war, ये 1929 में आ गया था। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि यहां पर सबसे पहले ये वाला जो था ये 1864 में आ गया था, wounded and sick in armed forces in the field। ठीक, फिर ये जो आया कन्वेंशन फॉर द एमिलियरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द वुंडेड, ये कब आया? एक सेकेंड, इसको हम यहां देखते हैं। हेग कन्वेंशन ऑफ 1899 एंड 1907। तो ये 18, हाँ 1899, 1864 के बाद 1899 एंड 1807। ओके, तो हम इसको यहां लिख लेते हैं, सब एक साथ आ गए। ये 1864, देन कन्वेंशन फॉर द एमिलियरेशन ऑफ द वुंडेड, ये जो है 1899 एंड 1907। ओके, देन कन्वेंशन रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ये 1929। और ये रिलेटिव टू द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्संस इन टाइम्स ऑफ वॉर, ये 1949। ठीक, तो जो 1864 से बात शुरू हुई थी वो सब 1949 तक सब एक जगह कोडिफाई कर दिया गया। अब the first two conventions elaborated on the principle that the sick and wounded have neutral status. The POW's convention further developed the 1929 convention by requiring humane treatment, adequate feeding, and the delivery of relief supplies, and by forbidding pressure on prisoners to supply more than a minimum of information. The fourth convention contained little that had not been established in international law before Second World War. Although the convention was not original, the disregard of humanitarian principles during the war made the restatement of its principles particularly important and timely. The convention forbade inter alia the deportation of individuals or groups, the taking of hostages, torture, collective punishment, offenses that constitute outrages upon personal dignity. Outrages upon personal dignity. Okay, the imposition of judicial sentences including executions without due process guarantees. Due process of law के बगैर आप execute कर देंगे, ठीक है, hostages आप बना लेंगे, torture करेंगे, collective punishments देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब prohibit किया गया कहां पर? Geneva Conventions में, in conventions में, and discriminatory treatment on the basis of race, religion, nationality, or political beliefs. Obviously, if I am anti-American, I should be treated humanely by America if I am taken as a POW. Okay. In the decades following Second World War, the large number of anti-colonial and insurrectionary wars threatened to render the Geneva Conventions obsolete. After 4 years of Red Cross-sponsored negotiations, 2 additional protocols to the 1949 conventions covering both combatants and civilians were approved in 1977. अब देखिए ये first protocol, the first protocol extended protection under the Geneva
Geneva and Hague Conventions to persons involved in wars of self-determination, which were redefined as international conflicts. The protocol also enabled the establishment of fact-finding commissions in cases of alleged breaches of the convention. The second protocol, Protocol Second, extended human rights protection to persons involved in severe civil conflicts which had not been covered by the 1949 Accords. ये दो चीजों में कौन से अब कोई नई कन्वेंशन नहीं आ सकती थी क्योंकि कंप्लीट कोडिफिकेशन हो गया था, तो एडिशनल प्रोटोकॉल्स आए। एडिशनल प्रोटोकॉल में जो पहला प्रोटोकॉल था, कौन से पर्संस इन्वॉल्व्ड इन सेल्फ डिटर्मिनेशन, ओके, विच वर रीडिफाइंड एज इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। सेल्फ डिटर्मिनेशन जैसे अभी पैलेस्टीन लड़ रहा है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। और protocol also enabled the establishment of fact-finding commissions in cases of alleged breaches of the convention, और fact-finding commissions भी होने चाहिए alleged breaches में। The second protocol extended human rights protections to persons involved in severe civil conflicts which had not been covered by the 1949 Accords. It specifically prohibited collective punishment, torture, the taking of hostages, acts of terrorism, slavery, and outrages on the personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment, rape, enforced prostitution, and any form of indecent assault. तो जो सिविल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, नॉर्मली सिविल वॉर हो रही है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल, जैसे इराक में सिविल वॉर हो गई यूएस के इंटरफेरेंस के बाद। यूएस ने जब वॉर डिक्लेयर करी इराक पे, तो फिर वहां पे सिविल वॉर हो गई। ऐसी सिचुएशन में जो प्रोटेक्शन है ह्यूमन राइट्स का वो सिविलियंस को मिलना चाहिए, तो ये एडिशनल प्रोटोकॉल सेकंड में आया था। ओके, देन कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ इट, the end of the Cold War, during which tensions between ethnic groups had been suppressed in states throughout Eastern and Central Europe and elsewhere, gave rise to a number of civil wars, blurring the distinction between internal and international conflicts and complicating the application of relevant legal rules. In a number of cases, example in Yugoslavia, Rwanda, and Somalia, the United Nations Security Council declared that internal conflicts amounted to a threat to or a breach of international peace and security, which thus made its resolutions on the conflicts binding on the combatants. Okay, then comes the last part of it. More than 180 states have become parties to the 1949 conventions. Approximately 150 states are party to Protocol 1. More than 145 states are party to second protocol. Though the US is not. See, you will not find this country, United States, which calls itself as the front runner in defeating terrorism, global terrorism. You will not find this country anywhere in any convention that talks about keeping the human rights and democracy. This is the biggest irony, and it calls every other country to counter global terrorism, but still it is not found anywhere in any humane step which is taken in the discourse of international law. In addition, more than 50 states have made declarations accepting the competence of international fact-finding commissions to investigate allegations of grave breaches or other serious violations of the conventions or of Protocol 1. The importance of the Geneva Conventions and their additional protocols was reflected in the establishment of war crimes tribunals for Yugoslavia 1993 and Rwanda 1994, and by the Rome Statute 1998, which created an international criminal court. Someday we can take International Criminal Court and the Rome Statute to the International Criminal Court as topic of another lecture. Okay, by the time you are most welcome, and you are requested to scan this QR and to scan this code, and please subscribe to the official YouTube channel of Paathshala classes. Thank you.